Reaching the Keibul Lamjao National Park is fairly easy. This place is located near the village of Moirang, which can be reached from Imphal by various modes of transport. Once you reach the national park, you need to take the permits for all the team members as well as any cameras that you're carrying inside this national park. You can also hire some guides at this gate itself. To move around the national park, the best way is to walk. And the places are clearly labeled. You can see that the left side goes towards the Sangai viewpoint, whereas the right side goes towards the guest house. Walking on this national park is a bliss in itself, just like walking on any other natural trails. It is filled with evergreen trees, and the silence is broken by sounds of the birds and insects around this forest. The Keibul Lamjao National Park or Sangai National Park is very different from regular conservation areas. It is also extremely fragile ecosystem as it is the only floating national park in the world. This is the footmark of the deer. It is quite surprising to see the amount of waste that is left behind by the tourists. People throw all sorts of litters on the track. And I was also amazed to see the dedication shown by the guide to collect these plastic wrappers and put them back in the dustbin. I tried best from my side to pick a few of these plastic wrappers too. It's a humble request to the visitors to keep track of their waste and not leave anything behind except your footprints. Then we started climbing towards the viewpoint, and you can see these are certain touch-me-not plants which were found on the way. This hillock looks over the entire floating national park. You can have a great view of the entire national park from the viewing center. A pair of binoculars is extremely recommended to view the Sangais, which may be lost in the dense cover of these small grasses. The total area is 40 kilometers square, of which around 27 kilometers square is covered in fumdis or floating landmass. Interestingly, it was not long before we spotted a Sangai. Sangai's scientific name is Ruciferus eldi, while it is also known as the Eld's deer. The national park is located on and around the Loktak Lake that has social, economic, and ecological importance. In fact, the lake is one of the Ramsar sites under the Convention on Wetland of International Importance. आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है प्राइवेट? मैं वॉलंटियर ही हूँ। अच्छा, वॉलंटियर है कंजर्वेशन के लिए? हाँ, कंजर्वेशन करने के लिए।
यहाँ पे आएंगे सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच आप हाँ। लोग आएंगे तभी ज़्यादा हिरन नज़दीक दिखा पा सकते हैं। अच्छा उन लोगों का जो भोजन लेने का समय ही है। अच्छा, भोजन लेने का समय सुबह में रहता है। हाँ, ओके और शाम 6 बजे 4 बजे के बाद उन लोग को फेमस हो रहा है। और ये जगह की वॉल में हाँ हो रहा है क्योंकि ये फ्लोटिंग नाम की वॉल की कहीं जगह पे आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। राइट, फ्लोटिंग फुंगदी सिर्फ यहाँ पे है। वॉल पे इसीलिए केबुल लमजाओ नेशनल पार्क को एक और नाम दिया जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहे जाते हैं। ओके पानी बोट में रह गया है। It felt blissful as well as peaceful at the same time, channeling across the tranquility of this water channel. हुमदंग नाम पौधे ही है वो पे यहाँ का जो शंघाई का फेवरेट फूड भी यहाँ पे रहते हैं। उसको हम पहुँचने के बाद अब ज़रूर दिखा देंगे। इसको हम चटनी के साथ खा सकते हैं। इसका अलग वो होते हैं। ये मणिपुर के महिलाएं। ना मार्केट है ना, हाँ 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 उसी में ये सर हाँ, ये वो हुमदंग। ये खुंदल है। हाँ हुमदंग। खुंगदंग। हाँ और HUMDANG। HUNDANG। ये फेवरेट प्लांट है उनका। हाँ इन लोगों का फेवरेट फूड है। ओके इसी के रहने के कारण से यहाँ पे सांप भी कम ही है सर। सांप कम है यहाँ पे। हाँ ओके, सांप भी कम ही है। तो वाइल्ड बोर सांप खा लेता है। हाँ पहले यहाँ पे बहुत सारा सांप था ना। हाँ पहले सांप थे हाँ, पर वाइल्ड बोर रहने के कारण से सांप कम हो गया। सांप कम हो गया है। और वाइल्ड बोर रहने के एक हाँ जो संगाई को एक हाँ जो उन लोगों को एक प्रॉफिट मिला है अच्छा वो क्योंकि जो संगाई यहाँ पे फोकबियर और संगाई ये दोनों अपना घर बना नहीं सकते, अच्छा। पर यहाँ पे जो रहने वाला वाइल्ड बोर है ना, हाँ हाँ अपने ब्रीडिंग सीजन के समय घर बना सकते हैं। ओके इसी घर को यहाँ का जो हाँ वो दोनों यूज़ करते हैं। आप ओके नाइस। इसीलिए वो दोनों एक दोस्त की तरह यहाँ पे जी रही है।
Finally, we were back on the land and we were greeted by a beautiful butterfly. To sum it up, all I can say that whenever you are traveling to this place or any other place, please try not to litter. Collect back all the wrappers and any other waste material that you have and take it back and throw it at proper disposal points. With this thought in mind, let's wrap up this video. See you in the next video. Meanwhile, please check out my other videos if you have not checked them out. Thank you.